Hey there and welcome back to our videos, and this time we are going to do variables. Imagine आप किसी किचन में जाते हैं and you see this. Basically यहाँ पे क्या हो रहा है, this is extremely disorganized and अगर आपको चीज़ if you want to find something you can find it because it's hidden away, tucked away inside that mess, that pile. तो इसका क्या इलाज है? बेसिकली आपको इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सबसे पहला काम आपने करना है वो ये है कि आपने इनमें हर आइटम को एक लेबल करना है. जब आप हर आइटम को एक लेबल दे देते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि वो आइटम है क्या और फिर वो किस जगह पे पड़ा हुआ है. जब आप लेबल करते हैं समथिंग लाइक दिस, इट मेक्स योर किचन सुपर नीट एंड टाइडी और आप आंखें बंद करके भी कोई भी चीज़ अगर ढूंढना चाहें यहाँ से तो यू कैन डू दैट. एंड एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी डू विद आवर डाटा. अगर हमने कोई वैल्यू हमें चाहिए और हमने इसको इस्तेमाल करना है तो पहले हम उसको लेबल करेंगे और फिर इस्तेमाल करेंगे सो दैट वी फाइंड व्हाट वी वांट. वैल्यूज को लेबल किए बगैर हम पाइथन में या किसी भी और लैंग्वेज में डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते एज सच. सो फॉर एग्जाम्पल, if we have a value we can attach a label to it and this label basically is called the variable name. And अगर हम example की बात करें, let's say you have a cat which has a name Simba and then you can attach a label to this value. This is string value जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था. Let's say आपने 50 रुपए का समोसा खरीदा और आपने इसके साथ एक लेबल अटैच कर दिया which is called the price. अब ये लेबल आप अपनी तरफ से कोई भी नाम बना के अटैच कर सकते हैं लेकिन उसके कुछ रूल्स हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे. अब यहाँ पे क्योंकि आपने एक लेबल अटैच किया, जब भी हमें एक प्राइस यूज करनी है तो वी विल यूज दिस लेबल कॉल्ड प्राइस. सो हाउ डू वी क्रिएट वेरिएबल्स इन पाइथन? दैट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. सो यू सी हियर ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे देखें कि दिस इज कोड, पाइथन कोड. यहाँ पे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, दो लाइंस आपको नजर आ रही हैं. सबसे पहली लाइन में इट सेज नेम इक्वल्स सिम्बा, राइट, और दूसरी लाइन में इट सेज प्राइस इक्वल्स 50. सो ये जो इक्वल्स है, दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर मैथ क्लास. मैथ के अंदर दिस इक्वल इज यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स. हियर दिस इक्वल इज नॉट कंपेयरिंग टू थिंग्स, इट इज असाइनिंग one thing to another or it is bounding one thing to another thing. So basically here line number 1 mein when you say name equals to Simba, it is going to bound the label name to the value, string value Simba. And similarly in line number 2 when you say price equals to 50, it is going to bind that label called price to the value 50. Again ये label आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं जहां जिस तरह के हम यहाँ पे बना रहे हैं. This equals to operator, basically this is called the assignment operator, and we use assignment operators to bind labels to values or reassign labels to other values. So for example, ये जो कोड आप देख रहे हैं इसकी visual representation is going to look something like this. आपने एक string value create की और उसके साथ आपने एक label को bind कर दिया which is called name, और इसी तरह आपने एक integer value create की which is 50 और उसके साथ आपने एक label को bind कर दिया which has the name called price. Now अगर आप करें price equals to 70, so again this is not comparing, this is assigning, relabeling. जब आप करते हैं price equals to 70, अब क्या होगा, जो आपका label है price, it's going to be removed from the previous value and then it will be reassigned to the new value which is 70. और जब आप इस प्राइस को यूज करेंगे तो then you will get the new value of 70 and you will not get the previous value 50. So इस तरह आप लेबल्स को किसी भी तरह से रीअसाइन कर सकते हैं किसी और चीज के ऊपर. और अगर आप चाहें तो आप मल्टीपल लेबल्स को एक ही वैल्यू के ऊपर भी अटैच कर सकते हैं, तो फिर सारी वैल्यू लेबल्स वो एक ही वैल्यू के ऊपर एक ही वैल्यू को कॉरस्पॉन्ड करेंगे इसेंशली. अच्छा, ये लेबल्स बनाने के कुछ रूल्स हैं which is how you name these variables. Labels और variables basically the same thing. जो अब हम इसको term use करेंगे that is called the variable. जब हम कहते हैं variable, it means that a label that is attached to a certain value. अब variables को बनाने के लिए there are certain rules. First of all,
आपका जो वेरिएबल नेम है दैट मस्ट स्टार्ट विद आइदर अंडरस्कोर और लेटर. सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट स्टार्ट्स विद अंडरस्कोर, और सेकंड एग्जांपल में इट स्टार्ट्स विद द लेटर. सो दिस इज अ वैलिड वेरिएबल. इन एग्जांपल्स में the third one does not start with a letter or an underscore. In fact, it starts with some other character, in this case a digit. Or fourth case line में it starts from other special character. So these are invalid variable names. और इनके बीच में स्पेस भी नहीं हो सकती, ना ही आप माइनस का साइन डाल सकते हैं ना प्लस का साइन डाल सकते हैं. These are all invalid. So variable names can contain essentially either letters or digits or underscores. इनके combination से आप कोई भी variable name बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ जो पहला character है उसमें आप digit नहीं डाल सकते, उसमें सिर्फ underscore और letters ही होना चाहिए. These are all valid variable names. This one is not because it contains some special character which is not in the rules. आपके जो variable names हैं, they are also case sensitive, meaning कि this distinguishes between capital letters and small letters. For example, here you see that the first variable इसका v बड़ा है और second line में first variable इसका v छोटा है. ये दोनों फर्क variable हैं. They are not the same because Python language is case sensitive. और इसी तरह line number 3 में आपका f capital है और v capital है और line number 4 में सब के सब capital है. So all of these are different variables. Keep that in mind. This is a very important point. And Python is again a case sensitive language. So अगर आप for example गलती से इसका character बड़े की बजाय छोटा लिखते हैं, तो that is going to create a new variable which can be hard to debug for the beginners, especially in the beginning. Variable names cannot be keywords. Keywords essentially, for example, you have if keyword. Keyword वो reserved words होते हैं जो कि Python language या कोई भी और language अपने मकसद के लिए यूज करती है. Python के अंदर if is a keyword, reserved word, def is a reserved word, while is a reserved word. आप इनको variables नहीं बना सकते. myInt is not a keyword, therefore it is a valid variable name. और ये बाकी सारे rules को भी पूरा कर रहा है. Now let's go ahead and take a look at the demo. So I have basically launched Visual Studio Code. इसमें आप जाएं टर्मिनल पे और आप करें न्यू टर्मिनल. दिस इज द टर्मिनल विंडो और यहाँ पे आप इफ यू टाइप पाइथन, यहाँ पे आप इंटरैक्टिव मोड में चले जाएंगे. अब व्हाट आई डू इज आई सिंपली क्लिक दिस साइड एंड ड्रैग इट अपवर्ड्स सो दैट इट कवर्स द एंटायर स्क्रीन. और मुझे अपनी शक्ल भी थोड़ी सी छोटी कर लेनी चाहिए. दैट्स ओके. Alright, so यहाँ पे जैसे आप Python interpreter लगाते हैं तो it shows you some stuff which is irrelevant to us. What we can do is we can simply press Ctrl L, which is going to erase all of those previous messages or previous history. So now basically let's calculate an area or circumference of a circle. Let's say you create a variable called radius equals to 10. Radius 10 करने का मतलब है कि आप यहाँ पे you are binding the label called radius to the value 10. So this is an assignment statement and it is creating a new variable which is bound to the value 10. Now let's see what the value of pi is, and when you press enter it gives you an error because pi is not defined. आपने इस label को किसी value के साथ attach नहीं किया. It's still free. In order to use this you need to bind this to a certain variable, certain value. इस case में we'll use the approximate value of pi 3.1415 for example. And when you take a look at the value of pi, it is going to give you the appropriate value because now it's bound to this value. Refresh, and so far we have the value of pi and so far we have the value of radius, which are already bound to these values. Let's calculate the circumference. Circumference equals to, that is 2 star pi star radius. Now when you press enter, what's going to happen is this is going to attach the label called circ, short for circumference, to
the value which is on the right hand side. अब right hand side के ऊपर जो value है वो हमें अभी पता नहीं है क्या है, वो हमें पहले calculate करनी है. So calculation के लिए Python basically is going to go to the label pi और देखेगा कि label pi किस value के साथ attached है, उसको पकड़ के ले आएगा. फिर आगे जाएगा, वो देखेगा radius किस value के साथ attached है, उसको पकड़ के ले आएगा. अब वो दोनों वैल्यूज जब आ गए तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, आपके पास एक फाइनल वैल्यू आएगी और फिर सर्क का लेबल उस फाइनल वैल्यू के साथ जाके अटैच कर देगा. यहाँ पे इट हैज डन दैट एंड वी सी दैट द फाइनल वैल्यू द सर्कमफ्रेंस दैट इज गोइंग टू बी 62.83. अगर हम यहाँ पर रेडियस को चेंज कर दें एंड लेट्स से इंस्टेड ऑफ 10 वी गिव द रेडियस टू बी, सेट द रेडियस टू बी 20. और अगर हम देखें सर्कमफ्रेंस की वैल्यू क्या है तो इट्स स्टिल द प्रीवियस वन, ये अपडेट नहीं हुई बिकॉज सर्कमफ्रेंस को नहीं पता कि रेडियस की वैल्यू कब अपडेट हुई है. इस लाइन में सर्कमफ्रेंस उस पॉइंट इन टाइम में कैलकुलेट हुआ, कैलकुलेशन होने के बाद एक वैल्यू आई और सर्कमफ्रेंस सर्क का जो लेबल है वो उस वैल्यू के साथ बाइंड कर गया. अब आगे आपने जब रेडियस की वैल्यू चेंज की तो आपने सर्कमफ्रेंस को रिकैलकुलेट नहीं किया, जिसकी वजह से सर्कमफ्रेंस की वही पुरानी वैल्यू चल रही है. और सर्कमफ्रेंस कैनॉट हैज नो वे टू डिटेक्ट whether these values, for example radius, was updated or not. Now if we calculate area equals to pi star radius star, we see that this is the value that is being bound to the label called area. Yeah, we can also print the values. We can do that two at a time, circ and area, and this is going to print both of these values. So this was a very short introduction to creating and naming variables, and we saw how we can attach these variables or bind these variables to certain values. Next video में we will talk about string values and how we can use those to represent text.